Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic stocks climb more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above Sensex closes above 57,500. Nifty settles near 17,250. Gold falls at MCX for June contracts to trade at 51,090 rupees per 10 grams, and Brent crude prices slipped below $105 per barrel. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत पर घरेलू शेयर बाजार में लिवाली 23 प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक ऊपर आए। सेंसेक्स 57,500 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 17,250 के नजदीक हुआ बंद। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य घटकर 51,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $105 प्रति बैरल से नीचे आई। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। कल की गिरावट के बाद आज फिर से निवेशकों में उत्साह देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,500 के स्तर से ऊपर एक बार फिर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 17,200 के स्तर को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 702 अंक यानी 1.23% की बढ़त लेकर 57,521 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 207 अंक यानी 1.21% की उछाल के साथ 17,245 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों की मांग भी बनी रही। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.83% ऊपर आ गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.12% की बढ़त हुई। The Sensex and the Nifty today climbed more than 1.5%. The domestic stocks indices rose amid positive cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above 57,500 points, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 17,200 level. The Sensex gained 702 points, or 1.23%, to close at 57,521, while the Nifty surged 207 points, or 1.21%, to finish at 17,245. In the broader market at the BSE, the mid-cap gained 0.83%, while the small-cap index ended 0.12% up. In the Sensex pack, 26 companies locked gains while 4 declined. Hindustan Unilever was the top gainer as it added 4.6%, followed by Asian Paints, which rose 3.2%. Power Grid gained 2.8%. NTPC climbed 2.7% and Larsen & Toubro surged 2.5%. Among losers, Bharti Airtel slipped 0.8%, while Mahindra & Mahindra fell 0.5%. In sectoral indices at BSE, 18 out of 19 indices surged except the telecom index, which fell 0.8%. FMCG gained the most with 2.1% appreciation, followed by Power Grid, which rose 1.9%. Utilities index climbed 1.8% and capital goods surged 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,621 companies gained, while 1,788 fell. Shares of 109 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 76 रुपए 49 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। डॉलर का आज का प्रदर्शन पिछले 2 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्रा की तुलना में अंतर्दिवसीय कारोबार में आज डॉलर 0.93% की बढ़त के साथ 103.92 के स्तर पर पहुंच गया।
राजीव, बाजार में कल हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, आज हमने लिवाली देखी। 3 बजे तक लिवाली के बाद थोड़ा सा कह लें कि बाजार नीचे आया है। आज की तेजी के पीछे क्या सब कारक रहे? देखिए, आज मनोज एक्सपायरी थी अप्रैल सीरीज कॉन्ट्रैक्ट की, और अगर आप देखेंगे तो लार्जली अप्रैल में बाजार नीचे की तरफ गया था बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजन, और कुछ अर्निंग सीजन जो शुरू हुआ उसमें उतने अच्छे जो उम्मीद के हिसाब से नतीजे थे वो नहीं आ रहे थे। तो उसलिए बाजार में शॉर्ट पोजीशन जो है, जिसे कहे कि बिकवाली का दर बहुत दिन तक चलता रहा, तो आज के दिन नॉर्मली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव देखते हैं। जो भी आप मूव अगर आप मंथ में देखेंगे या वीक में देखते हैं, कभी सोमवार को, तो इस बार थर्सडे को वो मूव आई है। तो लार्जली शॉर्ट कवरिंग थी, बिकॉज जो भी स्टॉक, जो इंडेक्स में जो स्टॉक थे जो बड़े, वो थे कि जो जैसे कि इन्फोसिस वगैरह, जो कि इस महीने लार्जली अपने नतीजों के बाद घटे थे। तो लार्जली आई वुड एट्रीब्यूट दिस रैली जो आज हुई है to short covering rather than anything fundamental. Rajiv, you just mentioned the quarter four results. So we've seen that, of course, we are seeing various companies coming out with their quarter four results. Today we have seen Axis Bank, SBI Life, Bajaj Finserv, all, posted profits for the quarter four. Do you think that is also yesterday HUL and Bajaj Auto also posted, gains in their quarter four results? Do you think that has had an impact on the market? No, I think, if you look at their results, they were, yes, of course, there was a growth, but in market, what happened? The growth has to be kind of adjusted to what is the expectation. If expectation is, let's say, X, and then if the numbers are, even if they've grown a bit below the expectations. The expectations have already built into the prices. That's the beauty of the market, is that what's going forward, it discounts it today. So, in fact, even in HUL, the stocks like HUL, it was a margin, despite the fact that the company has been facing inflationary headwinds in their raw material, they were able to post better numbers. That probably was the reason why we saw some short covering, and some, of course, in case of HUL, you can say some safe haven buying would have happened. But otherwise, I don't think that these numbers are not discounted by the market, because even if you, as of now, you look at it, these stocks are still sitting with a huge gains. Despite the fall of last 1 month, if you look at on a year-on-year basis, or probably in last 2 years, it's sitting with hefty gains. So I don't know. I don't think so that one day quarter result can help the market. But at this point of time, in my opinion, probably we have seen market moving up today. If there's nothing wrong happening in the global market to overnight US market, we might see this trend continuing for a day or so. So what probably will happen is they're going to mimic what's happening in the globe. If the Dow falls, they will fall. So volatility probably will be the order of the day in coming weeks and months, because there are 3 factors which are extremely important. One is the valuation itself, which are not cheap by any stand. Second is is what happened to Russia and Ukraine, because that is lingering on, and we don't know when the clarity is going to emerge. And third is the oil prices. And of course, what does the US Fed, how does the US Fed behave? It is clear they're going to move the interest rates up. Will the inflation in US come down or not? How will they behave? So there are many tailwinds, and headwinds are not there as of now, because valuations are the only tailwinds which were there in, maybe 1.5 years back. And there was, of course, a tailwind of liquidity being provided. So none of them is there. So I for one feel that we are going to see a higher volatile phase, rather than looking at the broader index movement, that is Nifty and Sensex. Retail investors should focus on the companies which they own in their portfolio. Let them forget what's happening to Nifty. What is happening to the bottom line of the businesses which they have their own in their portfolio, something which they should be looking at this point of time. You mentioned volatility, of course, and as you've mentioned, volatility will continue, is likely to continue in the coming days as well. But the fact that the Sensex has been swinging, the mood swing has been between around 56,000 and 59,000, more or less. What does it say about the inherent strength of the Indian market? I don't see inherent strength in the sense that right now what has happened is, the last 6 months we have seen so much of outflow from the Indian market. Despite that, the correction has been limited to 10-12% from the highs. Of course, the
nature of the corrections has been very different from what it used to be in past. They're far more volatile, far more one-day based, strong reactions of the market. The only underlying strength which I can see is that the flow of the domestic investor through SIP, through insurance companies, through other, of the movement of savings to the financial markets is still continuing at a much better rate even during bad times. When the market is corrected, we haven't seen much decline of inflows from the markets as far as the retail investors concerned. So that's a big change. I mean, I don't know whether I should call it as a strength, but that's one big trend which has emerged in the last 2.5 years where whatever said and done, you have a certain set of money which just keeps coming, and that absorbs the supply of volatile nature of the FPI money. राजीव, हम आपका ध्यान डॉलर की तरफ ले चलना चाहेंगे और डॉलर जो दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राएं हैं प्रमुख, उनकी तुलना में जो इसका सूचकांक है वो 103 से भी ऊपर यानी 104 के आसपास पहुंच गया है। किस रूप में यह प्रभावित करेगा विश्व मुद्राओं को और खासतौर से हमारे रुपए पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए मनोज, कि अगर आप उस बास्केट की बात करें, उसमें से लार्जली जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो जापानीज येन का रहा है और वो काफी सालों से एक सर्टेन रेंज में था, विच हैज गॉट ब्रोकन ऑफ। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट हैपनिंग इन डॉलर इंडेक्स, तो वो एक गिवन थिंग है। पहले भी हो चुकी है, 2013-14 में भी हो चुकी है, उसके पहले 2002-03 में भी हो चुकी है। सो दैट्स अ गिवन थिंग। जहां तक आपने रुपये की बात करी, so that has shown strong resilience. अगर आप देखेंगे over a last 5-6 year period, we have seen rupee performing well. But again, मेरा मानना ये है कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि रुपी स्ट्रांग ही रहे तो अच्छा है। हमारे रुपी में अगेंस्ट यूएस डॉलर एक नेचुरल टेंडेंसी है टू डिप्रिशिएट। वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए बिकॉज उससे हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो लोग इम्पोर्ट करते हैं उनकी हेजिंग कॉस्ट, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो थोड़ा सा अपना रोक लेते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर, बट आई डोंट थिंक सो कि रुपी में एज ऑफ नाउ कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज एक हमारा बिगेस्ट जो फैक्टर इम्पैक्ट करता है हमारे करेंसी को वो है ऑयल। अभी $100 के आसपास चलता रहता है, बट ऑब्वियसली इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट ऑफ मनी जो इस टाइम ऑयल की ट्रेडिंग में जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसने उसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अगर ये थोड़े दिन ऐसे रहा और चला तो तभी उम्मीद है कि यूक्रेन और रशिया का जैसे ही ये इशू सॉल्व होगा तो ऑयल का जो स्पेकुलेटिव मनी है वो उससे बाहर निकलेगा। बिकॉज कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि आप देखें कि दुनिया की फैक्ट्री जो चाइना है वहां पे कंजम्पशन कम है, लॉकडाउन है, कंजम्पशन कम हो रही है ऑयल की, और ऑयल के प्राइस ऊपर मूव करे। तो लॉजिकल रिलेशनशिप अभी उन कमोडिटी प्राइस में इज एब्सेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे वो ऑयल हो, चाहे आप उसे कहें आप मेटल्स हो, या इवन एग्री कमोडिटीज। यूक्रेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सनफ्लावर ऑयल का, उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो गई है। तो इट इज नॉट दैट रियल डिमांड लेड हाइक, इट इज अ डिसरप्शन लेड हाइक। तो जो डिसरप्शन लेड हाइक होती है उसका लार्ज परसेंटेज जो है वो वापस करेक्ट होने की टेंडेंसी होती है। इन माई व्यू, बिकॉज ऑफ विच आई डोंट थिंक कि जो हमारा रुपी है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट करेगा, बट थोड़ा जरूरी है, मतलब करेगा नहीं, बट लेकिन इट इज रिक्वायर्ड दैट वी डेप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू जो हमारे जिन बास्केट के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, आसपास की कंट्रीज जिनके साथ हम एक्सपोर्ट्स में कम्पीट करते हैं। तो टू रिमेन कॉम्पिटिटिव वी शुड हैव स्लाइटली मोर वीकनेस इन द रुपी देन बीइंग द स्ट्रेंथ व्हिच वी आर सीइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम, बने रहिए हमारे साथ। अभी कुछ एक विराम के बाद हम फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, हम आपका ध्यान कह लें बाजार के उथल पुथल की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। हमने चर्चा की अभी की एक सीमित दायरे में कह लें कि कारोबार हो रहा है और आपने बाजार के जो कह लें कि मजबूतियां हैं, इनर स्ट्रेंथ है भारतीय पूंजी बाजार की, उस पर चर्चा करते हुए आगाह किया कि उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में भी बना रह सकता है। यहां अहम सवाल हमारे जो श्रोता हैं उनके नजरिए से ये बनता है कि इस माहौल को देखते हुए उनका निवेश और उनका व्यवहार क्या रहना चाहिए पूंजी बाजार में, जबकि जो FIIs हैं वो लगातार बिकवाल बने हुए हैं। देखिए मनोज, जैसा कि ये जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो फ्लोटिंग मनी होता है, हॉट मनी, वो टेंड टू गो बैक। और ये बिकवाली का दौर शुरू है अक्टूबर से, जब से ये पहला इंडिकेशन आया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और फेड इज वेरी क्लियर कि वो अपनी मनी प्रिंटिंग, इजी मनी को बंद करके थोड़ा सा करेगा, तो वो आ रहा है। पर उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे बहुत कोई फर्क पड़ा हो यहाँ तो ब्रॉडर मार्केट, मिड एंड स्मॉल कैप वगैरह में ऐसा नहीं है, विच इज अ बुलिश साइन। जहां तक आपने व्यवहार की बात करी, मेरा हमेशा से मानना है कि स्टॉक मार्केट जो है, मैं आप स्टॉक नहीं खरीदते, आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं। तो जो नॉर्मल लोग, जो रिटेल इन्वेस्टर जहां फंसता है वहां ये करता है कि उसकी शर्तें होती हैं स्टॉक लेने से पहले। शर्तें एक्चुअली में होनी चाहिए कि बिजनेस बड़ा अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हो। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है, वो फंस जाता है टिप्स में। उसे चाहिए 10 रुपए वाला शेयर जो 3 महीने में डबल हो जाए या 6 महीने में डबल हो जाए। ऐसी सोच से सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी सोच को ठीक रखें। एंड एज दे से बुल मार्केट में बहुत बुल मेनी फ्रेंड्स, बियर द फ्यू इन्वेस्टर एज नन। सो आप व्हेन यू आर बाइंग, आप आज की देर में जब बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, दुनिया इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, आप ध्यान से इन्वेस्ट करें एंड डोंट गेट इनटू दिस पेनी स्टॉक्स तो बीच बीच में चलते रहते हैं कि ये हो जाएगा, इसकी खबर आई है। जस्ट अवॉइड देम एट एनी कॉस्ट। दूसरा, SIP कर रहे हैं, वॉलेटाइल मार्केट है, डज नॉट मैटर, आप कर दीजिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल नेवर, हमेशा तो रहेगी नहीं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी प्रॉब्ली आफ्टर मे बी आफ्टर करेक्शन ऑल्सो विल रिज्यूम दैट ट्रेड, तो बढ़ जाएगा। सो स्टे विद क्वालिटी। और अगर आप अपना समय बाजार को पढ़ने में नहीं लगा सकते तो प्लीज आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू ही मार्केट में जाएं। अदरवाइज कुछ दिनों बाद आप फिर मार्केट में रहने की बजाय मार्केट से बाहर हो जाए। कैपिटल गेन्स तो आए नहीं, कैपिटल रही नहीं। Rajiv, we were talking about volatility, of course, and a question that I want to ask you is that India's biggest IPO, the Life Insurance Corporation IPO, which has been announced yesterday, and it's due next week. Now, earlier, the valuation was 13 lakh, around 13 lakh crores. Now it has been slashed to 6 lakh. It has come down to 6 lakh crores. And earlier the government was supposed to offload about 5% of its stake. Now it's going to be 3.5% stake the government is going to offload. Now, some analysts believe that this decision to, slash to come down to 3.5% is also to do with the volatility in the market which is there at present. What do you have to say about that? There are two things. Coming first to the valuation part of which you said has been slashed down. I don't know. See, what happens is that normally there are story gets planted in the media. Ye aisa hai. Now, some of these story about valuations and X and Y and Z are neither confirmed or neither can be confirmed nor can be denied by anyone in this world. Neither the merchant banker nor the government, no one will deny. Yes. So these narratives actually float. Now the fact is that I don't know, when somebody says me, oh, it has, when everybody says it hasn't come down, on what basis we were saying that it will be that? That was some news reporter who decided, okay, got some story and he did the story and everybody started circulating it. And again, thanks to Google, the other reporter who did the story did a Google search and said, oh, this story has done this, so I'm also taking that valuation. So this valuation theory went on moving and moving and moving. Now we have reached a stage where we are saying, this has been come down. Coming to this part of your question of the volatility, see, the fact is that at this price, it is one of the cheapest insurance stocks. And in insurance, the biggest strength of any company is ability to raise capital. So as a PSU, they have strong ability, and not only because they are PSU,
otherwise also, given the size of the company itself, I think they can raise any amount of money which they want if and when required. My suggestion, my reading about this volatility is, see, to suck out 35,000 crores, close to that, from a single issue, it's sensible that you don't give you can't give a liquidity shock, so you don't suck out the liquidity at the same time. Of course, there are many policy holders, many new investors who are to get it. I think the best part of this issue would be that the equity cult would reach to a place where it has never reached. Yes. To the people who never thought they will be participating into equity markets. And some of them will remain in the market for years to come. So it could be one reason, that the issue size has been kept small because the government doesn't want to disturb the market, and it is intelligent thing, to be very honest. In fact, the valuation, this thing, this narrative I've been hearing on television channels also, that it has been come down. I just don't find it. Look at the business, look at the comparative value of others, other companies. And as a promoter, if government is leaving something on the table for listing gain, see, everybody can't think like a Paytm. कि मुझे आदि सब कुछ जो है दे दो, बाद में उसका तुम सोचते रहना. So government, probably if you look at other PSU, let me remind you, around 10-12 years back, Coal India also came with an issue. And look at the post-listing gain, and it was able to help revive the primary market. I think the hit which some of these new age companies have brought to the IPO market, maybe, there is a probability, if global market remain in a sane mode, then probably the issue of LIC probably might help even revive market back. Because if there is a listing gain, we might see interest coming back in primary market. Yeah, what you said about valuation, that is exactly what the secretary also said yesterday in the, during his press conference, that, there was never any talk of this 13 lakh crore or whatever. And the other interesting point that you've raised is about, the issue reaching the equity market, extending to places to tier 2, 3 cities where people had never before participated. In fact, people in tier 2 and tier 3 have participated. But in bigger numbers now, they will become. Yes, not bigger number, of certain select people who are largely holding only policies, have never looked at it, or think stock market to strategy jaga hai. All those people with that thought process in their mind are the ones who will probably look at. Some of them, at least I believe 25%, if let's say 50 lakh people are going to come or 70 lakh people are going to come, I think 25% of them will remain in market forever and ever and ever. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज तेजी बनी रही. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% लाभ में रहा. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.8% ऊपर आ गया. हांगकांग के हिंगसेंग में 1.7% की वृद्धि हुई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% लाभ में रहा. उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी तेजी चल रही थी. अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1% बढ़त के साथ चल रहा था. फ्रांस का CAC 40 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि जर्मनी के डैक्स में 1.4% की वृद्धि बनी हुई थी. Moving on to the U.S. market, the Dow and the S&P 500 indices ended marginally higher yesterday following a steep drop the day before, with strong revenue forecasts from Microsoft and Visa helping to alleviate worries about slowing global economic growth and rising interest rates. The Dow Jones Industrial Average Index and the S&P 500 both rose 0.2%, while the Nasdaq Composite Index closed flat. आगे बढ़ते हैं. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में MSME सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया. ये MSME को पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अधिकतम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम करने की पहल है. Moving on to commodities, oil prices today fell around 0.5% amid caution about fall in oil demand in China due to the economic impact of COVID-19 restrictions. However, supply worries due to Russia-Ukraine conflict capped the losses. In intraday trade, Brent crude was trading around $104.70 per barrel, while WTI
crude prices were at $101.60 per barrel. Rajiv, here I want to ask you something. If we talk specifically about in the Indian context, of course, the fuel prices have held steady for the past few weeks now. Yesterday, the Prime Minister asked the states to cut VAT on fuel prices, to be able to make it more affordable to the common man. Do you think the states can afford to do that? Well, some of them can surely do that. I mean, it's very clear. I mean, if you look at, this analysis is not come, but it would be interesting if the figure is released that if the, states, how much tax their buoyancy has come because of the GST collection in their kitty. So, of course, there are some states which probably have a genuine reason for not doing, but surely a large number of states can do it. See, but the fact is that nobody wants to cut their, pocket short, and they will say, no, I can't do it, I have this, excuses are 20. You can make them, and they will continue to. I mean, the fact is that they can surely afford, and some states have done. Maybe they'll let the election come, they will also realize, oh, I have to do it, like other states did when they were going for elections. So, of course, they can do it, but will they do it is a big question, and they will continue to fight wars on television channels. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज 110 रुपए घटकर 51,090 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। मई अनुबंध वाली चांदी 975 रुपए कमजोर होकर 63,705 रुपए प्रति किलो पर आ गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना कमजोर होकर $1,886.60 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ $23.20 प्रति औंस पर आ गई। राजीव, यहां पर हम सोने पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि सोने का जो कह ले कि पिछले कुछ समय में रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है, और वर्तमान जो उथल पुथल का माहौल है उसे देखते हुए आने वाले दिनों में सोने का व्यवहार कैसा रह सकता है। मनोज, ये वो एसेट क्लास है जो अनसर्टेनिटी में थ्राइव करता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये ऐसा एसेट क्लास है जो कि आउट परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस। एंड सेकेंडली, हम इंडियंस के लिए जो यूएस डॉलर में सेव नहीं करते, उनके लिए उनके पोर्टफोलियो में ये एक नेसेसरी इवल है जो आपको रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ डॉलर एक्सपोजर। तो आने लगता है कि थोड़ा सा तेज रहेगा। But Rajiv, very quick comment. According to a World Gold Council report, India's gold demand has declined 18% in the first 3 months of this year. What do you have to say for that? No, that happened largely because the third wave was there and there were some issues. And see, before that, look at the kind of jump we had seen. We have seen a base effect. And see, demand might have come down for X, Y, Z reason because of anything. My comment was morely because of the fact that will it move, the prices will move up or not. Right. Maybe because of the increase in the prices and there is rising inflation, people might say, okay, let me postpone that. But the prices are different from what the demand and the actual buying and selling is. जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks climb more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 57,500. Nifty settles near 17,250. Gold falls at MCX for June contracts to trade at 51,090 rupees per 10 gram. And Brent crude prices slip below $105 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Manoj and Anubhav saying bye-bye. Namaskar.